Sensor and actuator networks in IoT. Sensor and actuators are two critical components of every closed-loop control system. Such a system is called a mechatronic system. इसको हम लोग देख सकते हैं इस डायग्राम से, जहाँ पर मैंने एक कंट्रोल सिस्टम बना रखा है एंड द डाटा इज बीइंग फेड फ्रॉम दिस कंट्रोल सिस्टम टू द सेंसिंग यूनिट. और ये सेंसिंग यूनिट क्या करता है, जो भी आपने डाटा उसने कलेक्ट किया है, जो भी वेरिएबल वो डिटेक्ट कर रहा है, दैट इज सेंट टू द कंट्रोलर बाय कन्वर्टिंग दैट पर्टिकुलर सिग्नल, एनालॉग सिग्नल, टू द डिजिटल फॉर्मेट बाय यूजिंग एन एडीसी और समथिंग, यूजिंग एम्पलीफायर्स. कंट्रोलर को दे दिए. कंट्रोलर फिर फाइनली अकॉर्डिंग टू द सर्टेन एल्गोरिथम एक डिसीजन मेक करता है और उसको फाइनली एक्चुएटिंग सिस्टम को पास ऑन करता है. तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी कंट्रोल सिस्टम में थ्री बेसिक पार्ट्स होते हैं, दैट इज सेंसिंग यूनिट, कंट्रोलर एंड एक्चुएटिंग सिस्टम. तो a sensing unit can be as simple as a single sensor or can consist of additional components such as filters, amplifiers, modulators, and other signal conditioning equipments. For example, ADC. One of the most simplest is ADC because most of the signals जो हमें मिलते हैं सेंसर से वो एनालॉग फॉर्म में होते हैं. तो हमें 90% केसेस में उसको डिजिटल में कन्वर्ट करना होता है बिकॉज द कंट्रोलर पार्ट, व्हाटएवर द कंट्रोलर वी आर यूजिंग, वो ज़्यादातर हमारे पास जो अवेलेबल होते हैं वो डिजिटल फॉर्मेट के होते हैं. एनालॉग कंट्रोलर्स बहुत रेयर होते हैं. ठीक है, तो कंट्रोलर का एक्सेप्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंसिंग यूनिट, मेक द डिसीजन बेस्ड ऑन द कंट्रोलर एल्गोरिथम एंड आउटपुट कमांड टू द एक्चुएटिंग सिस्टम. फाइनली जो एक्चुएटिंग सिस्टम है उसके अंदर एक्चुएटर्स होते हैं. फॉर एग्जांपल मोटर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ मोटर्स, ज़्यादातर हम लोग मोटर एक्शंस उससे करते हैं. और भी डिफरेंट एक्चुएटर्स होते हैं, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे. तो एक्चुएटिंग सिस्टम इज सिंपली डूइंग द एक्शन according to the control signal given by the controller. This actuating unit also consists of some power supplies and some coupling mechanism between the controller and the actuating unit. So these are the three basic units of any control system. और इसको मैंने इस फिगर से एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि हाउ कैन बी डिफरेंशिएट सेंसर एंड एक्चुएटर्स. सेंसर का काम क्या है कि वो रियल वर्ल्ड से डाटा सेंस कर रहा है एंड फाइनली मेजर कर रहा है. ठीक है, द फंक्शन ऑफ सेंसर इज टू सेंस द डाटा फ्रॉम द रियल वर्ल्ड एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज इन द एनालॉग फॉर्म. ओके, तो उसको फाइनली डिजिटल रिप्रेजेंटेशन करना, उसका इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनाना. ठीक है, इसके लिए हम और भी कंपोनेंट साथ में ऐड ऑन कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल एम्पलीफायर, फिल्टर, जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया. ठीक है, तो सेंसर का वर्क है टू कलेक्ट डाटा फ्रॉम द रियल वर्ल्ड. फाइनली आफ्टर डूइंग सम प्रोसेसिंग एंड डूइंग सम कंट्रोल, आफ्टर द कंट्रोलर प्रोसेस अकॉर्डिंग टू द एल्गोरिथम, फाइनली जो हमें उस सेंसर के डाटा से जो भी हमें फाइनली आउटपुट देना है या कोई एक्शन करना, ठीक है, दैट इज डन बाय द एक्चुएटर्स. और यू कैन सिंपली से दैट एक्चुएटर्स आर the reciprocal of sensors. Whatever the sensor sense, accordingly the actuator works, and that finally give the useful work to the real environment. So this is how we can differentiate sensor and actuators. One of the simplest example is our human body. Our human body, as we know that we have five sensing elements: vision, hearing, smelling, taste, and finally the touch. These all the sensing element finally give the input signal to the brain, and accordingly the brain functions and give the controlling signals to the actuators. Our actuators in our human body are normally, as we know that they are hand, legs, it can be stomach, it can be heart, it can be lungs. Accordingly, according to the control signal given by the brain, these actuators works. Or more simple, sensor are simply that gives data to a CPU and finally the action is given to the actuator. Now let us see all these things in detail. First of all, I consider sensors. One of the most important block of IoT. जो हम लोग कहते हैं ना इंटरनेट ऑफ थिंग्स.
थिंग्स, यहाँ पे जो थिंग्स है, दैट इज नथिंग बट सेंसर्स. दिस सेंसर्स आर गिविंग डाटा टू द क्लाउड्स. ठीक है, after doing some cloud computing and by some embedded system, they are finally giving some control signal to the actuators. So one of the most important building block is the sensor. The Internet of Thing. A thing is nothing but sensor and actuators. First, smart object are any physical object that contains the embedded technology to sense and or interact with the environment in a meaningful way by being interconnected and enabling the communication among themselves or an external agent. तो कोई भी स्मार्ट ऑब्जेक्ट वो है जो अपने आप according to some algorithm collect the data, interact with the other smart objects in the environment, and finally give the useful results. More specifically, a sensor measures some physical quantity and convert that measurement reading into a digital representation. That digital representation is typically passed to another device for transformation into useful data that can be consumed by intelligent device or human. So this is the basic definition of a sensor. Sensor क्या करता है कि एक, या यूं कह सकते हैं कि this is simply transform one form of energy to the another form. Some more definitions regarding sensor. Sensor is a device that when exposed to a physical phenomena, जब वो किसी physical phenomena कुछ भी हो सकता है, temperature, displacement, force, whatsoever, produces a proportional output signal. According to the variable, whatever variable you decide, and accordingly you decide the sensor, उसके प्रोपोर्शनल जो भी उसने डाटा लिया उसके प्रोपोर्शनल एक आउटपुट सिग्नल जनरेट करता है. दिस आउटपुट सिग्नल कैन बी अगेन इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, मैग्नेटिक, डिपेंडिंग अपॉन विच टाइप ऑफ सेंसर यू आर यूजिंग. ऑफर ज़्यादातर हम लोग सेंसर को मोर टेक्निकल टर्म में ट्रांसड्यूसर भी कहते हैं. द टर्म ट्रांसड्यूसर इज ऑफन यूज्ड एज सिनोनिमसली विद द सेंसर्स. However, ideally a sensor is a device that responds to a change in the physical phenomena. सेंसर हम ऐसे डिवाइस को कहते हैं कि कुछ भी रिस्पॉन्स करे, कुछ भी चेंज, मतलब जो भी मेजरमेंट करने के लिए वो बना है उसमें कुछ भी जो वेरिएबल हल्का सा भी चेंज हो रहा था, यू जस्ट सिंपली just respond through that. On the other hand, a transducer is a device that convert one form of energy to the another form of energy. फॉर एग्जाम्पल, इसके लिए एक सबसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है जो सभी लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा, थर्मोकपल. हम लोगों को मालूम है थर्मोकपल में हम लोग दो जंक्शंस फॉर्म करते थे, एक हॉट जंक्शन, एक कोल्ड जंक्शन. ड्यू टू दिस द चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ द टू जंक्शंस, देयर वाज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जनरेटेड ड्यू टू विच करंट फ्लोज टू द थर्मोकपल. तो देखा जाए तो थर्मोकपल क्या कर रहा है, इट्स रिस्पॉन्स टू टेम्परेचर चेंज. ठीक है, अगर आप एक जंक्शन को, कोल्ड जंक्शन को फिक्स रखें और हॉट जंक्शन का टेम्परेचर वेरी करें, अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन ऑफ द टेम्परेचर देयर विल बी द चेंज इन द करंट फ्लोइंग थ्रू द थर्मोकपल. ठीक है, तो इस तरह से थर्मल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो अगेन थर्मोकपल इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ अ ट्रांसड्यूसर. Or if you make it at a macro level, it can be designed as a sensor. Therefore, a thermocouple can be called a sensor and or a transducer. Now, if we classify the sensor, there are two main way of classifying it. One is the sensor can be as passive or active. Passive means a sensor that required some energy source to derive to function. And the active sensors are those that doesn't require any power sources. They generate their own power. For example, thermocouple, जैसा भी हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा thermocouple, वहाँ मुझे कोई पावर सोर्स की जरूरत नहीं. ठीक है, only due to the variation of temperature the EMF is generated. Another example is piezoelectric. वहाँ पर सिंपली हम प्रेशर इम्पोज करते हैं एंड ड्यू टू द चेंज इन प्रेशर और ड्यू टू द चेंज इन फोर्स देयर इज अ चार्ज डेवलप्ड ऑन द surfaces.
फोटो इलेक्ट्रिक, देयर आर सर्टन मटेरियल्स जहाँ पर हम लोग लाइट देते हैं तो वहाँ पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होता है. तो दीज आर एक्टिव सेंसर्स. पैसिव सेंसर्स इंडक्टिव, कैपेसिटिव, रेजिस्टिव सेंसर्स, ये सब पैसिव सेंसर्स जहाँ पर मुझे एनर्जी सोर्स लगाने की जरूरत पड़ती है तब वो फंक्शन करते हैं. अनदर क्लासिफिकेशन कैन बी एनालॉग और डिजिटल. दिस इज ये जो बेसिस है, ये सिंपली जो मेरा सेंसर आउटपुट दे रहा है वो किस फॉर्म में दे रहा है. इफ इट इज गिविंग एन एनालॉग आउटपुट, दैट मीन्स अ कंटिन्यूअस सिग्नल प्रोपोर्शनल टू द सेंस पैरामीटर, देन दिस इज अ एनालॉग टाइप. और नॉर्मली इस तरह के सेंसर के लिए मुझे एक एडीसी लगाना पड़ता है, क्योंकि जितने भी कंट्रोलर्स हैं वो डिजिटल फॉर्मेट ही समझते हैं. ठीक है, तो फॉर द एनालॉग टाइप ऑफ सेंसर वी रिक्वायर्ड एडीसी, and the sensors which are giving digital output, they are known as digital sensors. For that, we doesn't record any analog ADC converters. We can directly feed that data to the digital controllers. In many sensors are required, it is more economical to choose simple analog sensors and interface them to a digital control equipped with a multi-channel analog to digital converter. अगर आपको बहुत सारे सेंसर्स यूज करने हैं और 90% 90 क्या मोर देन 90% सेंसर्स आर इन द आर ऑफ एनालॉग टाइप, तो वहाँ पर मैं मल्टी चैनल एडीसी यूज करता हूँ. एंड फाइनली बहुत सारे सेंसर्स एक साथ उनके आउटपुट्स को एनालॉग से डिजिटल कन्वर्ट करके फाइनली कंट्रोलर को देते हैं. तो दीज आर द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ सेंसर्स. I'm going to categorize on the basis of functioning. कोशिश की है कि मैं मैक्सिमम कवर कर पाऊँ. पहला सेंसर टाइप आ जाता है पोजीशन. पोजीशन सेंसर measure the position of an object. The position measurement can be either in absolute term or in the relative term. जब एब्सोल्यूट टर्म में करते हैं तो हम एब्सोल्यूट पोजीशन बताते हैं किसी की, और रिलेटिव टर्म मतलब कि आप किसी के रिलेटिव में मतलब किसी पर्टिकुलर रेफरेंस के रिलेशन में बताते हैं. एंड दैट टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर इज नोन एज और सेंसर इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट सेंसर. पोजीशन सेंसर कैन बी लीनियर, इट कैन बी एंगुलर, और इट कैन बी अ मल्टी एक्सिस. एग्जांपल्स आर पोटेंशियोमीटर, इंक्लाइनोमीटर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, जिसमें सब लोगों ने प्रॉक्सिमिटी सेंसर नॉर्मली कार्स में लगा देखा होगा, जो पीछे बैक करते हुए यूज होता है. वो आपको बताता है कि मैं कहाँ तक आपको ला के स्टॉप करनी. ठीक है, तो दैट्स इट नथिंग बट अ प्रॉक्सिमिटी सेंसर. अगर फिजिक्स की लैब में सब लोगों ने पोटेंशियोमीटर भी यूज किया होगा. एज यू मूव द स्लाइड द अपर पार्ट, तो आपकी अकॉर्डिंग टू द पोजिशन द वैल्यू ऑफ करंट चेंजेस इन द पोटेंशियोमीटर. So these are some of the simplest example of a position sensor. Next is occupancy and motion sensor. Occupancy sensor detect the presence of people and animal in the surveillance area, while motion sensor detect the movement of people and objects. Occupancy sensor एक particular area में कितने person हैं या कितने animals हैं ये detect करता है. ये occupancy sensor motion नहीं detect करता. उसके लिए मोशन सेंसर अलग है, दैट डिटेक्ट द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट और अ ह्यूमन बीइंग. द डिफरेंस बिटवीन द, वही नीचे एक्सप्लेन किया, द डिफरेंस बिटवीन द टू इज दैट द ऑक्यूपेंसी सेंसर जनरेट अ सिग्नल इवन व्हेन अ पर्सन इज स्टेशनरी, वेयर मोशन सेंसर डज नॉट. वन ऑफ द सिंपलेस्ट एग्जांपल्स आर इलेक्ट्रिक आई एंड रडार. नेक्स्ट इज वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन. Velocity sensor may be linear, angular, indicating how fast an object moves along a straight line or how fast it rotates. Acceleration sensor measure change in velocity. Examples are accelerometer and gyroscope. Accelerometer सभी लोगों ने देखा है, सबकी vehicle में लगा होता है. ठीक है, just that simply tells you how the velocity is varying. Next is force sensor. Force sensor detect whether a physical force is applied. फोर्स सेंसर का पहला काम कि फोर्स अप्लाई, कितना फोर्स अप्लाई हुआ है. दूसरा, कई कई जगह पर हम लोग इसका ये भी यूज़ करते हैं कि बियॉन्ड थ्रेशोल्ड वैल्यू, अगर आपको चेक करना कि ये पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड ऐसे ऊपर है किसी नीचे,
तो भी फोर्स सेंसर्स यूज किए जाते हैं. एग्जाम्पल्स आर फोर्स गॉज, विस्कोमीटर, टैक्टाइल सेंसर. सबसे कॉमन सेंसर मतलब सबसे ज़्यादा देखा सब लोगों ने देखा है टैक्टाइल सेंसर, टच सेंसर, जो कि मोबाइल्स में लगा होता है एंड टच स्क्रीन्स पे लगा होता है. दैट इज नथिंग बट टैक्टाइल सेंसर्स. प्रेशर सेंसर. Pressure sensors are related to force sensors measuring force applied by a liquid or gases. Pressure is measured in terms of force per unit area. इसके सिंपल एग्जांपल है बैरोमीटर्स, बॉर्डन गॉज, piezometers. Then next is flow sensor. Flow sensor detect the rate of fluid flow. They measure the volume or rate of fluid that has passed through a system in a given period of time. Examples are anemometer, mass flow meter, water meter. Acoustic sensor. Acoustic यहाँ पर sound से related है. Acoustic sensor measure the sound levels and convert that information into a digital or analog data signals. वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट एग्जाम्पल जो सभी लोग यूज करते हैं या सब लोग पता है, दैट इज माइक्रोफोन्स, जियोफोन्स, हाइड्रोफोन्स. ह्यूमिडिटी सेंसर. ह्यूमिडिटी सेंसर डिटेक्ट ह्यूमिडिटी, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर और पर्टिकुलर सब मास हो. कोई मटेरियल का ह्यूमिडिटी चेक करना हो तो वहाँ पर ह्यूमिडिटी सेंसर भी, या फिर सिंपली एयर का ह्यूमिडिटी चेक करने के लिए यूज करते हैं. दैट इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन अ पर्टिकुलर सैंपल. Humidity level can be measured in various ways: absolute humidity, relative humidity, mass ratio, and so on. Examples are hygrometers, humistors, soil moisture sensors, light sensors. Light sensors simply detect the presence of light. It can be visible or invisible also. Examples are IR sensors, that is infrared sensors, photodetectors, flame detectors. Next are radiation sensor. Radiation sensor detect the radiation in the environment. Radiation can be sensed by the sensitization or ionization detection. The simpler examples are Geiger and Muller counter scintillator, Newton detector. Temperature sensors. As the name suggests, that it simply senses the amount of heat or cold that is present in the system. They can be broadly of two types. Either it can be contact type or non-contact type. Simply as the name suggests, that the contact type temperature sensor need to be in the physical contact with the object being sensed, and a non-contact sensor do not need any physical contact, as they measure temperature through a convection or radiation. Examples are thermometer, calorimeter, temperature gauge. Chemical sensor. Chemical sensor measure the concentration of chemical in a system. When subject to a mix of chemicals, the chemical sensors are typically selective for a target type of chemical. यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि एक तो तरीका होगा कि concentration आपको चेक करना है. अगर बहुत सारे chemicals हैं, you have to finally find out a particular chemical, उसका कितना concentration है. So you can do also that with the chemical sensor. For example, a CO2 sensor simply sense only the carbon dioxide. Examples are breath analyzer, olfactometer, smoke detector. Biosensors. Biosensors detect the various biological elements such as organisms, tissues, cell, enzymes, antibodies, and nucleic acids. Examples are blood glucose, biosensors, pulse oximetry, electrocardiograph. So I am showing some. दिस वॉज द, मैंने कोशिश किया कि सारे सेंसर्स इसमें कवर्ड हो, परंतु इसके अलावा भी बहुत सारे हो सकते हैं. ठीक है, तो दीज आर द सम ऑफ द बेसिक सेंसर्स और यू कैन से बेसिक पैरामीटर्स टू बी सेंस्ड. बट मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं. जैसे यहाँ पर एक इंडक्टिव इफेक्ट सेंसर बेस्ड ऑन इंडक्टिव इफेक्ट. You can see that there is a red type primary coil, and there is a blue secondary coil 1 and green secondary coil 2, and there is a core moving in between. तो इसमें हो क्या रहा है कि as the core is moving, the
induction effect, due to the induction effect, secondary 1 and secondary 2 are getting flux linkage with the primary coil. तो जैसे जैसे मूवमेंट होता है, जब सेंट्रल पोजीशन में होता है तो दोनों में फ्लक्स लिंकेज बराबर होता है. In that case, the final output, that is the difference of the voltage in secondary 1 and secondary 2, the जो output आपको finally मिलता है, that is zero when it is in the central position. As it is moving towards secondary 1, आपको कुछ वेरिएशन मिल रहा होगा आउटपुट में, ऐसे ही सेकेंडरी 2 की तरफ मूव करेंगे तो कुछ वेरिएशन मिल रहा होगा. तो दिस इज अ सिंपली डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर. ठीक है, ये आपको डिस्प्लेसमेंट बता रहा है. ठीक है, दिस इज कन्वर्टिंग द डिस्प्लेसमेंट सिग्नल इनटू अ वोल्टेज सिग्नल और करंट सिग्नल. दिस इज अ सेंसर बेस्ड ऑन इंडक्टिव इफेक्ट. सिंपली सेंसर बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट. ये यू कैन से, यहाँ पर मेरे पास मैंने कोई सप्लाई वप्लाई नहीं दे रखी है. दिस इज अ सिंपल कॉइल. ठीक है, वो मैंने वोल्ट मीटर को लगा रखा है, आई एम जस्ट मूविंग अ मैग्नेट इन एंड आउट. तो बाय Faraday's law we know that due to this movement there will be a current induced in the coil. So on this basis there are many of the sensors can be developed. Again, this is again displacement sensor. Sensor based on piezoelectric effect. You can see there is a piezoelectric material and I'm imposing pressure on that. There is a voltage change. This type of effect can be used in the pressure transducers or pressure sensors. This is a sensor based on photovoltaic effect. Here, the two different materials are being made in contact, and when the light is imposed on this, due to photovoltaic effect, there is a flow of current. Okay, हमने देखा कि there is a variety of sensors available in the market. Some of I tried to explain in my previous slide. और फाइनली कोई सेंसर हमें यूज करना है, ठीक है, उसका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा. देयर आर सर्टेन पैरामीटर्स फॉर विच, मतलब जो हमको सोचने पड़ते हैं व्हेन यू आर फाइनली सिलेक्टिंग अ सेंसर. A number of static and dynamic factors must be considered in selecting a suitable sensor to measure a desired physical parameter. Following is some typical factors. सबसे पहला आ जाता है रेंज. मुझे किस रेंज का चाहिए, ठीक है. That is simply a difference between the maximum and the minimum value of a sense parameter. According whatever parameters के लिए आप जो भी आप सेंसर यूज कर रहे हैं, आप हर एप्लीकेशन के लिए उसकी रेंज डिफरेंट होती है. तो यू विल बी अकॉर्डिंग टू योर एप्लीकेशन यू विल बी डिसाइडिंग द रेंज एंड अकॉर्डिंगली यू आर सेलेक्टिंग द सेंसर. सिमिलरली रेजोल्यूशन, द स्मॉलेस्ट चेंज द सेंसर कैन डिफरेंशिएट. एक्यूरेसी, डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू. कितना एक्यूरेट है मेरा सेंसर. अगेन इट इज ऑन द एप्लीकेशन. If you are in the household application, you doesn't require any more accurate sensors. If you are in the industry, you need more accuracy. If you are going for a research, more accuracy. According to the applications, you are deciding your sensor on the basis of accuracy. Precision, ability to reproduce repeatedly with a given accuracy. मतलब कि मैं एक सेंसर, एक पर्टिकुलर रीडिंग मैं बार बार यूज करूं तो मुझे सेम रीडिंग बार बार मिले. देयर शुड बी नो वेरिएशन इन दैट. दिस शोज द प्रिसीजन ऑफ दैट पर्टिकुलर सेंसर. तो मुझे कितना प्रिसाइज चाहिए सेंसर, अगेन इट डिपेंड अपॉन द एप्लीकेशंस. सेंसिटिविटी, इट इज अ रेशियो ऑफ द चेंज इन आउटपुट टू द इनपुट चेंज. जितना मैं इनपुट वेरी करूं उतना ही मेरा आउटपुट वेरी करे. दिस शोज द सेंसिटिविटी ऑफ अ सेंसर. जीरो ऑफसेट, जीरो ऑफसेट ये कहता है कि मैं अगर कोई इनपुट नहीं दे रहा हूं तो आउटपुट कुछ नहीं आना चाहिए. अगर कुछ आ रहा है, नॉन जीरो वैल्यू है, दैट इज अ जीरो ऑफसेट. ठीक है, वो मैं चाहूंगा कि मिनिमम से मिनिमम हो, क्योंकि आइडियली इफ यू देयर इज नो इनपुट कोई आउटपुट नहीं होना चाहिए. पता ऐसा होता नहीं है. देयर इज ऑलवेज सम आउटपुट फॉर दैट.
Linearity, percentage of deviation from the best fit linear calibration curve. Or you can say simply, in a simple words, कि अगर मैं इनपुट और आउटपुट का इनपुट वर्सेस आउटपुट का ग्राफ प्लॉट करूं, इट शुड बी अ स्ट्रेट लाइन. जैसे जैसे मेरा इनपुट वैरी करे वैसे वैसे मेरा आउटपुट भी मिलता जाए. देन द पर्टिकुलर सेंसर इज लीनियर. Zero drift, the departure of output from zero value over a period of time. यूँ कह सकते हैं कि मेरा जीरो जो आउटपुट है वो एक मतलब कि जैसे जैसे टाइम बीतता जाए वैसे वैसे वो ड्रिफ्ट ना करे. जीरो है तो जीरो ही बना रहे. जीरो ड्रिफ्ट. रिस्पॉन्स टाइम, टाइम लैग बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट. कितना डिफरेंस लगता है, मतलब कि जैसे मैंने इनपुट अप्लाई किया मुझे आउटपुट कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, नैनो सेकंड के बाद मिलता है. दैट इज द रिस्पॉन्स टाइम. बैंडविड्थ इज सिंपली द बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर विच योर सेंसर इज रिस्पॉन्डिंग. यहाँ टेक्निकली इसको बताया गया फ्रीक्वेंसी एट विच द आउटपुट मैग्नीट्यूड ड्रॉप बाय 3 dB. दिस इज मच मोर टेक्निकल, बट मतलब कि बेस्ट वे है कि किस बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए मेरा सेंसर रिस्पॉन्स करता है. रेजोनेंस, रेजोनेंस एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगी जिस पे आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल रही होगी. तो दैट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी वो आप कौन सी चाहते हो, दैट इज गिवन बाय रेजोनेंस. फ्रीक्वेंसी एट विच द आउटपुट मैग्नीट्यूड पीक ऑकर्स. ऑपरेटिंग टेम्परेचर, किस रेंज, मतलब कि मैं किस एनवायरनमेंट में अपना सेंसर यूज़ करना चाहता हूँ तो वहाँ का टेम्परेचर रेंज क्या है, तो उसी हिसाब से मैं अपना सेंसर सेलेक्ट करता हूँ. डेड बैंड, हर एक सेंसर का अपना एक डेड बैंड होता है. डेड बैंड मीन्स एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ इनपुट जिसके लिए वो आउटपुट नहीं देता. एंड फाइनली द मोस्ट important that is signal to noise ratio between the magnitude of signal and the noise at the output. ये हमें मिनिमम चाहिए. SNR, इसको हम लोग SNR कहते हैं. इट शुड बी मिनिमम. वो सिग्नल मतलब कि वो सिग्नल को पकड़े, नॉइज को ना पकड़े. सेंसर ऐसा होना चाहिए. एंड this can be defined by this parameter, signal to noise ratio. Now let us see some examples of the sensors. कैसे मतलब कि इसको हम लोग IoT में इसको कैसे अप्लाई करके हम इसका एप्लीकेशन कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया है प्रिसीजन एग्रीकल्चर, स्मार्ट फार्मिंग का, which uses a variety of technical advances to improve the efficiency, sustainability and the profitability of traditional farming practice. जो भी हम लोग पुराने फार्मिंग टेक्निक्स है उसको इम्प्रोवाइज करने के लिए वी कैन यूज IoT and these sensors. Let us see how. This includes the use of GPS and satellite aerial imagery for determining field viability, robots for high precision planting, harvesting, irrigation and so on, and real-time analytics and artificial intelligence to predict the optimal crop yield, weather impact and soil quality. तो ये सब चीज़ें हम permutation and combination करके we can improvise the agriculture. Among the most significant impact of precision agriculture are those dealing with the sensor measurement of variety of soil characteristics. अब यहाँ पर सबसे important जो रोल है सेंसर का एग्रीकल्चर में, जो हम लोग सॉइल, ये पर्टिकुलर सॉइल में कितनी ह्यूमिडिटी है, कौन से केमिकल कंटेंट्स हैं जिससे कि हम इसमें कौन सी फार्मिंग कर पाए. दैट कैन बी डन बाय केमिकल सेंसर्स. दिस इंक्लूड रियल टाइम मेजरमेंट ऑफ सॉइल क्वालिटी, pH लेवल, salinity, toxicity level, moisture level for irrigation planning, nutrient level for fertilization planning, and so on. All this detailed sensor data can be analyzed to provide highly valuable and actionable insight to boost productivity and crop yield. और ये मतलब आराम से हो सकता है. ठीक है, यू कैन यूज अ डिफरेंट टाइप ऑफ सेंसर्स, वैरायटी ऑफ सेंसर्स. जितने भी ये पैरामीटर्स आपके सामने दे रखे हैं ये सारे सेंसर्स अवेलेबल हैं. यू कैन जस्ट डिप्लॉय देम इन द फील्ड एंड यू कैन फाइनली गेट द डाटा फ्रॉम दैट. You can process that data by using cloud computing और जितने भी IT की टेक्निक्स हैं.
उसको यूज़ करके फाइनली यू कैन इवन दो एक्चुएटर्स भी आप लगे आप उसके ऊपर उसका फाइनली एक्चुएटर्स को देखकर आप वहाँ पर फार्मिंग भी कर सकते हैं यूजिंग रोबोटिक्स एंड डिफरेंट टेक्निक्स. Biodegradable passive macro sensor to measure the soil and crop conditions. और इवन दो आज की तारीख में हमारे पास बायोडिग्रेडेबल पैसिव माइक्रो सेंसर्स भी अवेलेबल है कि जो आपको आपने डिप्लॉय किए तो वो सेंसर्स किसी भी तरीके से सॉइल और वहाँ के एनवायरनमेंट को खराब नहीं करेंगे. ठीक है. These sensors developed normally at North Dakota State University and DCAC can be planted directly into the soil and left in the ground to biodegrade without any harm to the soil quality. मैंने इसका शायद एक फिगर भी दिखा रखा है. This is some of the biodegradable sensors which are being used in farming. And one of the most simplest and the कॉमन एग्जाम्पल ऑफ सेंसर इज द स्मार्टफोन. सबके पास होता है, सबको पता है. उसमें तो सीरीज ऑफ सेंसर्स होते हैं. कैमरा, पेडोमीटर, ग्लोबल पोजिशन, जीपीएस, लाइट सेंसर, टच सेंसर, थर्मामीटर, डिजिटल बैरोमेट्रिक प्रेशर सेंसर, फिंगरप्रिंट सेंसर, माइक्रोफोन, मॉइस्चर सेंसर, गायरोस्कोप, ह्यूमिडिटी सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, मैग्नेटोमीटर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर. मतलब कि सेंसर्स का भरमार है स्मार्टफोन. और दिन ब दिन ऐड ऑन होते जा रहे हैं, नए नए फीचर्स उसमें ऐड ऑन होते जा रहे हैं. एंड दैट इज ड्यू ओनली ड्यू टू सेंसर्स. और तो और वहाँ से मतलब वो यू कैन यूज दे आर टेकिंग डाटा एंड गोइंग टू द इंटरनेट एंड फाइनली टेलिंग योर कंडीशंस. इवन आपकी हेल्थ कंडीशंस भी बता देता है. तो दिस इज नथिंग बट एप्लीकेशन ऑफ सेंसर्स इन IoT. With this, I am concluding the sensors. Hope you have enjoyed.